Namaste and welcome to Simple Life. Today I'll be sharing with you in this video कि कैसे हम अपने आप की manifestation जो हैं without techniques using any technique बल्कि this is very profound one which you can use, that is the spiritual surrender. आज हम बात करेंगे the 4 steps to spiritual surrender जिससे आप अपनी desires को manifestation process को आप और speedify कर सकते हैं और आपकी जो desires हैं वो आप accomplish कर सकते हैं. हाय, मेरा नाम दीना छाबड़ा है और मैं एक स्पिरिचुअल माइंडसेट कोच हूँ एंड आई बिलीव कम्प्लीटली इन ब्लेंडिंग योर माइंडसेट विद स्पिरिचुअलिटी. अगर आप उस एनर्जी के साथ अपने माइंड को, अपने थॉट्स को अलाइन कर लेते हैं तो जो भी चीज़ आपको चाहिए होती है वो डेफिनेटली आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होती हैं, या तो जो आपको चाहिए होती हैं या फिर जो आपके लिए बेस्ट होती हैं. दैट्स व्हाट माई फेथ एंड बिलीव इज़ and that has always shown in me in my life, and today I'm going to share the same thing with you. Step 1, spiritual surrender clay. Before I share the steps, I will like to give you some backdrop of it कि किस तरह से ये स्टोरी मेरी लाइफ में काम करी. एंड देर आर नॉट वन इंस्टेंट, देर लॉट ऑफ इंस्टेंस. सो आई रिमेंबर it was 2020, initially starting a time था when I was invited by an entrepreneur to conduct a workshop for their employees on mindset training, because that's what she attended. मेरा वो पर्सन पहले उन्होंने अटेंड किया था, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, उसके ऊपर मैं वर्कशॉप्स लेती थी. I don't know why that day, when before I was stepping into that workshop, this time I never prepared any notes, no presentation, nothing. And I just had a feeling that it has to be something with more of a soul connect when we are talking to people. And enough of mindset. I think I was drawn more towards spirituality, and I just went and I saw the projector was ready, the mic was ready, everything was there. And I told them that I don't need a projector today. Where's the presentation? I told I don't need a presentation today. So the words will flow. And I think that was the first time, because that came from a place of surrendering. I had an intuition of intention a day before doing this workshop. इस workshop को एक दिन लेने से पहले मेरे अंदर एक intention थी कि कुछ ऐसा करवाओ. Do have let something like this should happen, where the bond should not be just one day motivation kind of a thing. It should actually pierce the person's soul and make them, realize who they are. Aisa kuch intention I had that thing. So what I'm trying to say, the first step, now I'll be showing you how it happened in my life. The first step to your जो भी desire आपको चाहिए, you should get your focus off from, what is it in for me, rather than it should be what is for the highest good of all that should show up. That's the first step. So in that, I remember with that workshop, when I went and started conducting that workshop, तो उस समय ये इंटेंशन नहीं था कि मुझे कितना अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, मैं क्या अच्छा दे सकती हूँ. सो देवर नो नथिंग लाइक दैट. या आई हैड सर्टन पॉइंट्स आई रोट बिफोर दैट थिंग, कुछ कुछ आ रहा था दिमाग में, बट नो प्रैक्टिस, नथिंग, नो प्रेजेंटेशन, नो स्लाइड्स. आई जस्ट वांटेड माय हार्ट टू speak what it comes naturally. That was my intention, and something which comes from this side, from the heart, and which is going to be the best for the others. वो intention थी. So when you let go of your focus from what is in for me, something which I'm going to get from this thing, I would get praises from people, appreciation, बहुत अच्छा जाना चाहिए. My focus was not that कि बहुत अच्छा impact होना चाहिए, मेरे को बहुत अच्छा बोलना चाहिए. तो वो सब चीज़ें नहीं थी उस समय दिमाग में. बस तो then when I started speaking that day, I remember उसके बाद जब उस पहली वर्कशॉप मेरी ऐसी थी जिसमें I think 50% of people cried, and they came up individually to me after the workshop, and there were a lot of questions which we had that day, and everybody wanted to speak to me their pain. एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट आई वुड हैव रियलाइज्ड. आई थिंक तब तक की जो मैंने जितनी वर्कशॉप्स ली थी, वो जो कनेक्शन मुझे जो डीपर मिला था वो उस दिन मिला था, बिकॉज वो इंटेंशन डिफरेंट थी. बिकॉज दैट डे माई सरेंडर वॉज कम्प्लीटली टू द डिवाइन, वॉज to get off the focus ki what am I going to get from this workshop, how much they are going to pay for to me, what are, how best I can perform, what impact, what appreciations I'll get. I never had all those thoughts. My only intention was ki what's best for the highest good of all. So let the words flow today, and let your words and grace
guide us all today. So that's what your intention should be. Now you, how you can apply in your life also, अगर आज आपको कोई चीज़ चाहिए, so the best thing would be, let's say you are looking for a good job or something. So I would say, rather than just being focused so much attached to it, let go of your desire to get into that company or whatever you are looking for. So holding इतनी तेजी से उसे attach मत हुई, and just leave it. Just put an intention that that is what you desire, and leave it, and let, with the words that what's best for me, let it come to me. So what is for the highest good for me, let that come. So even this, अगर ये जॉब नहीं है, हो सकता है उससे अच्छी कोई आपके लिए वेट कर रही हो. सो दिस इज़ हाउ यू शुड प्रोसेस दैट थिंग. दिस इज अ फर्स्ट स्टेप टू स्पिरिचुअल सरेंडर. नंबर 2, आई थिंक दिस इज़ अगेन, जब हम बात करते हैं सरेंडर की, दैट इज़, हम जब भी बात करते हैं पूरी तरह से समर्पण की अपने, तो उसमें क्या होता है, हम जब सरेंडर करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये होता है, हमारा ज़्यादातर फोकस ये होता है हमारी लाइफ में जो चीज़ें काम नहीं कर रही होती हैं. हमारी ये तो रिलेशनशिप में हमारे को कोई कमी नज़र आ रही होती है, या हमारे फाइनेंसेस में आ रही होती है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ है, हमारे करियर को लेकर कहीं कोई चीज़ की कमी. सो जब आपका फोकस अपनी कमी को छोड़ के, again you have to again shift your focus from the lack, the scarcity of the things, the lack which is there in your life, to something that is working in your life, something that is beautiful, that still you can appreciate on. So that should be the second spiritual step to surrender. So let's give an example, कि अगर इस समय आपकी लाइफ में, लेट्स से आपके कोई, हो सकता है कोई आपका रिलेशनशिप अच्छा ना हो किसी एक के साथ, but you should keep shift your focus for the relationship you may have with others, you, for your friends you have in your life. उसके लिए आप gratitude दिखा सकते हैं, maybe, or other things which are working. You may have a very good career, you can focus on that thing. Oh, I have a good career, so you can make a list of all the things what is actually working beautifully. So stop focusing on what is not working right now, to the areas which are actually working in your life at that time. So you know, probably for your friends, be grateful for your friends, for the people who turn up in your life, your mentors or whatever you are showing up in your life. Or even if you are yourself a mentor for your students, you should be grateful for that, at least they are there with you. So ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. So that was the second step. Now step 3, आई थिंक दिस वन इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल, बिकॉज जब भी हम कभी भी सरेंडर करने की बात करते हैं, तो फॉर मी व्हाट हैज़ अ आई हैव नोटिस इन लाइफ, एंड मेरे साथ ही नहीं, मैंने जितने लोगों के साथ वर्क करा है, तो द कंसेप्ट इज़, कई बार चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, देर इज स्ट्रेचेस सो मच, आपको लगता है कि यूनिवर्स इज़ नॉट एट ऑल वर्किंग फॉर मी. एंड देन दैट मीन्स अगेन यू आर क्रिएटिंग. तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे होते हैं. समटाइम्स आप चाहते कुछ थे, बट आपका टर्न हो जाता है. आपको 3 महीने में कोई चीज़ चाहिए होती है, आप साल बीत जाता है, उसका साइन ही नहीं आ रहा होता है आपको. तो दीज आर लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स. मे बी यू हैव प्लान टू, लेट्स से आपने प्लान किया कि आपको आउट ऑफ सिटी जाना था पढ़ने के लिए, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस घर में ऐसे हो जाते हैं कि आप वहीं स्टक हो जाते हैं. फैमिली में किसी की तबीयत ठीक नहीं होती है, दे नीड योर सपोर्ट, यू कैन नॉट लीव एंड यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द सिटी. सो व्हाट हैपन्स इन दैट केस, तो ये जो ऑब्स्टेकल्स जो आ रहे होते हैं आपकी लाइफ में, तो आपको लगता है दे आर द वर्स्ट एंड द यूनिवर्स डजंट वर्क, बल्कि इस समय करने की ज़रूरत है सरेंडर. सरेंडर का इसका ये मतलब है कि जितना भी ये जो ऑब्स्टेकल्स है बेसिकली आपकी लाइफ में आ रहा है, दे हैव हिडन अपॉर्चुनिटीज़. मे बी दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू, बिकॉज हो सकता है आप कहीं और जाते तो कुछ और अपॉर्चुनिटी जो आपको इस सिटी में मिलने वाली थी वो नहीं मिलती आपको. सो देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन योर लाइफ. आई वुड लाइक यू टू रिफ्लेक्ट बैक टुडे. आज आप रिफ्लेक्ट बैक करके देखिएगा कि कुछ चीज़ें जब आपने चाही थी आपकी लाइफ में, वो अगर वर्क नहीं करी, पर उससे ज़्यादा कुछ बढ़िया हो गया, आपने सोचा नहीं था, बिकॉज़ क्योंकि अगर वो वर्क कर जाती हैं, आप उस एरिया में तो होते ही नहीं, तो आपके लिए वो चीज़ बेटर वर्क करी. सो आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट वे. आई गिव यू माई पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल. तो आई हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, लॉट ऑफ डिग्रीज, BEd, MBA, एवरीथिंग आई डिड, एंड वेरी लेट इन लाइफ तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं. एंड आई मीन आई वाज नेवर हैप्पी. एट वन पॉइंट मुझे लगा कि मैं कर तो रही हूँ, बट दिस इज़ नॉट अ सोल कनेक्शन. मुझे कहीं से उसमें फीलिंग नहीं आ रही थी. वो चीज़ें, वो ऑब्स्टेकल्स आते जा रहे थे, बट आई वाज लाइक किसी भी तरह से मुझे खुशी नहीं मिल रही थी. आई थिंक वो सारी जो ऑब्स्टेकल्स जो मेरे थे, आई लाइक के सेट, वो ऑब्स्टेकल्स में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ छुपी होती. अगर वो ऑब्स्टेकल्स नहीं होते, तो आज मैं शायद ये लाइफ में ये जर्नी जो मैं आज ट्रैवल कर रही हूँ, ये जो पाथ मैं फॉलो कर रही हूँ, इनफैक्ट वो कभी ना होता. तो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दोज ऑब्स्टेकल्स टू बी इन माई लाइफ. अगर वो जॉब्स वैसी ना होती, जो फ्रस्ट्रेशन लेवल जो वट एवर आई हैव
बीन थ्रू, अगर वो नहीं होते तो शायद मेरे को ये रास्ता, ये ओपनिंग, सो ऑब्स्टेकल्स आर ऑलवेज टेकिंग यू टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, बिकॉज हमें कई बार नहीं पता होता है व्हाट इज़ यूनिवर्स और डिवाइन प्लान इज़ फॉर अस. इट इज़ एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर आवर ओन गुड. वी से दैट थिंग बट वी फॉरगेट दैट थिंग. तो बिगर पिक्चर में आप वापस रिफ्लेक्ट बैक करिए. कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ में अच्छी नहीं हुई हैं एंड it took you to a lot of time, basically they were bringing you back to what is best for you. And step number 4, this is a beautiful way of doing it. I often do that thing. जब कभी कभार आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेज में होते हैं जब बहुत हताश होते हैं, काफ़ी लंबा समय होता है, then just simply pray and ask for a sign, because always ask and it is given, but be ready to receive also. So ask the universe for the sign. Show me that I am on the right track. कुछ तो sign भेजो आप. It could be in any form and you should be open to receive also. So for me, what happens sometimes when things doesn't work and it takes me 15 days or a month or something, I have always noticed when I ask that thing, show me a sign. So what happens, immediately, and I would write, this is what my intention is, this is how I should be. You won't believe, मेरे को सेम वर्ड्स कहीं किसी ने व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिए या मेल पे आ गए मेरे को. समबडी हु इनफैक्ट अननोन पीपल, दो जिन्होंने मेरी वर्कशॉप तक ही नहीं अटेंड करी है, मे बी समवेयर सोशल मीडिया प्रेजेंस में देखा है, the same words which I put in my writings, this is how I would like to be as a human. The same words, they reflected and appreciated me with the same lines. This is what I feel for you. So I was like on that energy that this is how the universe works for us. So you can ask for any sign. It could come in the form of words. It could come in the form of numbers. Some, if you are अवेयर ऑफ द स्पिरिचुअल नंबर्स, अगर आपको लगता है वो नंबर्स के फॉर्म में आपको यूनिवर्स साइन दे, या कुछ अच्छी चीज़ हो आपके पूरे दिन में, कुछ ऐसा घटे उस दिन टू गिव यू अ साइन की सरप्राइज, या कुछ अच्छा फीलिंग करवाए यू नेवर एक्सपेक्टेड, वो चीज़ें हो, तो दैट कुड बी स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन आस्क फॉर द लिटिल साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स. आई थिंक दीज आर द 4 ब्यूटिफुल स्टेप्स टू सरेंडर. Keep surrendering, and also keep surrendering when you think like I've already surrendered, I've done that thing. I think the best thing is keep surrendering more. I hope you like this video and stay connected and smile. We'll see you next week in another video. Namaste. And if you like this video, please do subscribe and do let me know any of the steps resonated with you, or आप इनमें से कौन से steps follow करना चाहेंगे, and would you be following any of the steps. Thank you.